Welcome to my YouTube channel SKM Talks. I'm Salil Manu. A series of public speaking tips. Today we are going to talk about know your audience. आप सबको नमस्कार. मैं आज पब्लिक स्पीकिंग टिप्स की सीरीज में तीसरा एपिसोड में ऑडियंस को पहचाने इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ. सो नो योर ऑडियंस. If you have not subscribed my channel till now, please do so, because I will be sharing tips related to public speaking every Saturday at 6 p.m. If you have not watched my previous 2 episodes, kindly do watch. I am giving the link in this video in the description box. Okay, chalo, let us now move to today's subject, that is know your audience. Audience को पहचान. So knowing audience before preparing a speech is very important. It is part of the preparation of your speech. कोई भी speech अगर public speech और presentation आप देने जा रहे हो, आप audience को जानना, audience की status जानना, it is very very important. So knowing your audience, ऑडियंस को पहचानने के पहले क्या क्या करना चाहिए, लेट अस सी दैट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑडियंस. ऑडियंस की स्टैंडर्ड जाना जरूरी है. कौन सी बैकग्राउंड से आता है, उनका कल्चर क्या है, उनकी डेमोग्राफी क्या है, व्हाट इज़ द डेमोग्राफी, व्हाट इज़ द कल्चर, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड, और व्हाट इज़ द एजुकेशन लेवल, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई किया है, और मेल फीमेल कॉम्पोजिशन क्या है, एज ग्रुप क्या है. बिकॉज अगर आपको व्हेन यू वांट टू स्पीक इन ए पब्लिक स्पीच, you should know the age group, you should know the standard, you should know the education background. Accordingly, you will have to prepare your speech. You can give the relevant examples. अभी कभी relevant examples दे सकते हो, उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से आप बात कर सकते हो. So that is very important to know the basic culture, standard, age group, gender composition, the background from where they are coming, and most important thing is who are they, वो लोग कौन है, what is exactly they are looking for from this session. Like वाईफी हम बोलते हैं, what is in it for you. वो लोग exactly इस सेशन अटेंड करने के बाद उनका टेक अवेज क्या क्या होना चाहिए, उनकी इंटरेस्ट लेवल क्या है. दूसरा, उनकी मूड क्या है, वेदर दे आर सीरियस और रिलैक्स्ड और जस्ट टाइम पास करने के लिए आ रहे. व्हाट डू दे वांट एग्जैक्टली. आप और उनके बीच में कॉमन क्या है, उनको क्या जानता है, व्हाट डू दे नो, what is their level of knowledge with related to your subject what you are going to speak. उनका मूड क्या है. So knowing audience in public speaking is very very important. Then you should also prepare the what could be the doubts, what are the frequently asked questions they are going to ask. क्वेश्चन आंसर को कैसे हैंडल किया जाए, that is also very very important. So in public speaking, as a part of preparation, knowing audience is very very important element, because if you know the audience, you know the status of the audience, you know everything about the audience, your speech, your preparation, your presentation will be much more effective and impact will be there definitely. Suppose when you are going to speak in a forum, check with the organizer whether any VIP is going to attend the session or not. In that case, try to take the details of the VIP so that you can address about him, you can talk about him at the opening itself. So knowing the details of any VIP person in the audience is also very important. This can be
done before the speech by checking with the organizers and take the details of the VIP participant, your VIP guest. Okay friends, I hope that you are clear about knowing the audience part. So preparation, know the audience is very, very important. Try to do that and then you see the difference in your speech. Thank you for listening to this once again. आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा. थैंक यू वेरी मच.